लोअर लिम्ब से एसोसिएटेड ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 का, और इस वीडियो में हमने बात करनी है अबाउट द वेनस एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ऑल्सो अबाउट द सेगमेंटल एज वेल एज सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द लोअर लिम्ब। सो पूरे लोअर लिम्ब का जो वेनस सप्लाई है और जो लिम्फेटिक सप्लाई है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सारा, ऑल्सो द इनर्वेशन ऑफ द लोअर लिम्ब, सो उसका रीकैप है। सो दिस इज अनदर रीकैप वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सारे लोअर लिम्ब की वेन्स, उसकी सेगमेंटल इनर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नर्वस सप्लाई एंड ऑल्सो द लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपको याद होगा कि इसी तरह की एक वीडियो हमने अपर लिम्ब में की थी। ऑल्दो मैं इसको रीकैप क्यों कह रहा हूँ, देखें इसको रीकैप करने का पर्पज़ ये है कि जब हम लोअर लिम्ब कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमने उस लोअर लिम्ब में वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट वेन्स जो उस एरिया को ड्रेन करती हैं। जैसे जब हमने फुट डिस्कस किया तो फुट की ड्रेनेज भी हमने कवर की, जब हमने लेग डिस्कस किया या थाई का एरिया डिस्कस किया। सो वी हैव डन द वेनस ड्रेनेज ऑफ डिफरेंट एरियाज। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज, लेकिन इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the cumulative venous drainage, and that's important to do because एक अच्छा recap भी हो जाता है और आपको एक overall picture मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Venous drainage acquires importance as blood has to flow up against the gravity। अब lower limb की beauty ये है कि if this is the lower limb, you know that lower limb में blood नीचे से ऊपर जाना है ना, towards the heart, because if this is the guy, then here somewhere is the heart and here is the lower limb, so blood has to move up against the gravity to reach the heart। तो इसीलिए ये पूरा सिस्टम समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऑब्वियसली अगर ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है तो कोई वेल्व्स होंगे, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, तो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द सेफेनस वेन कैन बी इजीली सीन इन द लेग। द वेरिकोज वेन्स यानी जो डायलेटेड वेन्स हैं, इफ अकर look quite ugly under the skin because they're very tortuous and they're very much clearly visible. Effort should be made not to develop the varicose veins. Now that's an important point. It means कि वो चीजें avoid करनी चाहिए जिनसे varicose veins होती हैं basically, okay? The lymph travels mostly to the inguinal group of lymph node. Upper limb में there is a हमने inguinal region में group of lymph node discuss किया था। सारा lymph ultimately इसी में जाता है। Sensory nerves जो जितनी भी lower limb की हैं, they are basically derived only from the ventral rami of this area, L1 to L5 as well as S1 to S3 segment of the spinal cord, only the ventral rami, not the dorsal. Lower limb bud rotates medially, so the extensor compartment lies in the front and the flexor compartment is the back. This is just opposite to what we have in the upper limb. यानी upper limb की अगर आप बात करते हो तो if this is the arm and this is the forearm, arm and forearm, so that's the flexor compartment जो front पे है, जहाँ पे flexion होती है। So flexor compartment is in the front. लेकिन अगर हम lower limb की बात करें तो flexor compartment is at the back. ये जो सामने आपको नजर आ रहा होता है थाई और लेग रीजन, दैट इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द एम्ब्रोलॉजिकल रोटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब बड्स मीडियली, ओके। तो तीन मुझे बेसिकली इस वीडियो में चीजें डिस्कस करनी है, एक वेनस रिटर्न, एक लिम्फेटिक ड्रेनेज और दूसरा इनर्वेशन। एक एक करके तीनों को हिट करते हैं। नंबर 1, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द वेनस ड्रेनेज। Consideration of the venous drainage is of great importance in the lower limb, particularly because the blood goes against the gravity. This is aided by a number of local factors, the failure of which give rise to varicose vein. अब जो भी मैकेनिज्म होता है ये है कि अपर लिम्ब में जो वेन्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये वेन्स हैं अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसमें वेल्व्स हैं ताकि ब्लड ऊपर की तरफ मूव करे, वापस नीचे ना आए। अगर ये मैकेनिज्म्स फेल होंगे यानी वेल्व अगर फेल होते हैं तो ब्लड कैन कम बैक, एंड इसकी वजह से जो वेन्स हैं दे विल बी डायलेटेड एंड इट विल लीड टू वेरिकोज वेन्स, ओके। Factors which help the venous return against the gravity. यहाँ देखें लोअर लिम्ब में बार बार ये वर्ड आएगा against the gravity because this is the standing person and the blood is going in the upward direction towards the heart, so this is against gravity. Some general features: there is a negative intrathoracic pressure which is made more negative during inspiration, and the negative intrathoracic pressure pulls the blood in the upward direction, okay. Then the arterial pressure in the overflow from the capillary bed also pushes the blood in the venous side. Then very important is the compression of the lower limb veins by the accompanying arteries. होता ये कि ये अगर वेन है तो इसके इधर भी कोई आर्टरी होगी, इधर भी कोई आर्टरी होगी। आर्टरी में पल्सेशंस होती हैं, उन पल्सेशंस की वजह से वेन में ब्लड को पुश मिलता है। Then there are valves also present which support and divide the long column of the blood into shorter columns. यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइप है, वेन है जिसमें ऊपर ब्लड जा रहा है, तो इसमें वेल्व्स हैं। अब वेल्व से ये होता है कि ब्लड ने अगर ये
कंपार्टमेंट क्रॉस करके ब्लड इस कंपार्टमेंट में आ गया, तो नाउ दिस इज वन सेपरेट कॉलम बिकॉज ये दो वेल्व्स के बीच में है, फिर ब्लड और ऊपर चला जाएगा. सो इट्स नॉट वन सिंगल ट्यूब, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स. एक और चीज जो ये तो जनरल फीचर्स हैं तमाम वेनस सप्लाई के, लेकिन जो लोकल फैक्टर्स हैं लोअर लिम्ब में पर्टिकुलरली, उसमें जो बातें आपको याद रखनी है, द वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब आर मोर मस्कुलर than compared to any other veins in the body. They have greater number of valves because against gravity blood ने move करना है. Superficial veins are connected to the deep veins by perforators. So superficial veins के लिए अलग नहीं पड़ी होती, they have perforators जो deep veins में जाके connect होते हैं. Then this is a very important concept. मसल का क्या रोल है लोअर लिम्ब में वेनस ड्रेनेज के लिए? होता ही है कि when the limb is active, the muscular contraction compresses the deep veins and drives the blood to move in the upward direction. So that's a very important point venous return के लिए कि muscles contract करते हैं. So much so कि आपके calf में एक muscle है gastrocnemius and soleus. These are like big muscles, also called the peripheral hearts. So जब ये compress करते हैं सराउंडिंग वेन्स को, तो उनमें काफी प्रेशर से ब्लड ऊपर जाता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स व्हिच हेल्प द लोअर लिम्ब वेन्स ताकि ब्लड को वो अगेंस्ट द ग्रेविटी टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाए. ओके, फेशियल फैक्टर्स, द टाइट स्लीव ऑफ द डीप फेशिया मेक द मस्कुलर कंप्रेशन ऑफ द वेन्स मोर इफेक्टिव बाय लिमिटिंग आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द मसल. सो डीप फेशिया की कवरिंग टाइट है और उस कवरिंग की वजह से अंदर जो मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बाहर की तरफ नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ इसकी मूवमेंट को लिमिट करता है ये डीप फेशिया. तो अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेन ही को कंप्रेस करेगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट इन द लोअर लिम्ब, पर्टिकुलरली टू फैसिलिटेट द ब्लड फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. Now, veins of the lower limb हैं कौन सी? The veins may be classified into three particular groups. Number one is superficial veins. Then there are deep veins and there are perforators. देखें, अंदर जो deep veins होंगी, simply they are called deep veins. ऊपर surface की तरफ जो होंगी, they are called superficial veins. और इनके बीच में जो connections हैं, these connections are known as perforators. ठीक है, तो one by one इनको हम discuss करते हैं. Let's first talk about superficial veins. इनमें जो आपको मेजर नाम याद रखना है, ऑब्वियसली द ग्रेट सैफेनस वेन एंड द स्मॉल सैफेनस वेन. सो यू मस्ट रिमेंबर ग्रेट एंड स्मॉल सैफेनस वेन, और इनकी फिर ट्रिब्यूटरीज भी हैं और कौन कौन सी छोटी ब्रांचेज जो इनमें ड्रेन करती हैं. दे लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया. जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, ऑब्वियसली दे विल बी प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑन द सर्फेस ऑफ द डीप फेशिया. Now they are thick walled because of the presence of a smooth muscle. मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो lower limb की veins हैं, they are rather more muscular as compared to any other vein. Okay, so they are thick walled, they are composed of muscles, they also contain some fibrous tissue, some elastic tissue. Valves are more numerous in the distal part of the veins than in the proximal part, because जैसे से blood ऊपर जाता जाएगा, ऊपर वाला is the distal part. तो जो ब्लड है उसको वापस आने के लिए रोकना है. So there are more valves in the distal region. A large portion of their blood is drained into the deep veins through the perforating veins. So superficial veins का blood चला जाता है into the deep via the perforators. ठीक है, अब तो ये दो आपको superficial veins के नाम याद रखने हैं, great saphenous and small saphenous. Okay, now these are the medial plantar deep veins. कौन कौन सी हैं? Medial plantar, lateral plantar, dorsalis peris, anterior posterior tibial. They're all different deep veins and their tributaries. जो हमने different जब compartments हम पढ़ रहे थे lower limb के, we discussed them. They accompany the arteries and are supported by powerful surrounding muscles. The valves are more numerous in the deep veins than the superficial vein because ज़्यादातर flow बहरहाल deep veins के through होता है, so they contain more valves as compared to the superficial veins. They are more efficient channels than superficial veins. Obviously, they are deeper, they are safer, they are more efficient, and they are very efficient because of the muscle contraction. तो deep veins जब muscles contract करते हैं, so उनमें blood काफी तेजी से ऊपर जाता है. And then perforators are obviously just the connections between the superficial vein and the deep vein. Their valves permit only one-way blood flow, और वो one-way blood flow होगा from superficial to deep. From superficial to deep vein, वापस नहीं आता. Okay, there are about 5 perforators that you need to know along the great saphenous vein and only 1 perforator along the small saphenous vein. अब थोड़ी सी इनकी details long saphenous की, small saphenous की वो हमें discuss करनी है, तो वो बात करते हैं. Long saphenous vein, remember, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is it? Is it a superficial vein or a deep vein? So it's a superficial vein. Superficial veins में मैंने आपको दो नाम बताए थे. I told you there is a great saphenous and a small saphenous. Okay. So, the dorsal venous arch
lie on the dorsum of the foot over the proximal parts of the metatarsal. So this is the dorsal venous arch जो foot पर है इस तरफ. Okay. It receives 4 dorsal metatarsal veins, each of which is formed by the union of 2 digital veins. So this is the digital vein coming from the digits, and then ultimately it is making the dorsal venous arch. Now the great or the long saphenous vein is formed. अच्छा ये दोनों synonymous words हैं. Great saphenous बोलो या long saphenous बोलो एक ही बात है. यहाँ इन्होंने long saphenous लिखा है. इससे पहले जो हमने नाम यहाँ point out किया था, that was great saphenous. It's the same thing. You either call it great saphenous or long saphenous, the same story. Great saphenous vein is formed by the union of the medial end of the dorsal venous arch. So go to the diagram. This is the big toe. So it has to be the medial end. So medial end say it emerges. Medial end of what? Medial end of the dorsal venous arch. It emerges and moves obviously in the upward direction. It passes upward in front of the medial malleolus. This is the medial malleolus. उसके सामने से गुजरती है. Crosses the lower 1/3 of the medial surface of the tibia obliquely and runs along its medial border to reach the back of the knee. It ultimately goes towards the back of the knee. Okay. The saphenous nerve runs in front of the great saphenous vein. अच्छा, thigh region में it inclines forward to reach the saphenous opening, where it pierces the cribriform fascia and opens into the femoral. So this is the deep vein, femoral vein. ये long saphenous vein ultimately femoral vein में open हो जाती है. But before piercing the cribriform fascia, it receives 3 named tributaries corresponding to 3 cutaneous arteries. And if you look at this diagram, let me zoom it out ताकि आपको एक frame में नजर आए further. Okay, so this is the dorsal venous arch. इसके medial end से this is the great saphenous vein का root leg में, and then behind the knee coming back in front again, and here it enters into saphenous opening के अंदर cribriform fascia. It pierces it, but before piercing into the cribriform fascia, it receives 3 tributaries: superficial epigastric vein, superficial external pudendal, and superficial circumflex. इसी नाम की arteries भी होती हैं, so उसी नाम की veins भी हैं. So ये story है long saphenous vein. So long saphenous vein basically सारे blood को, ये leg से आ रहा है ना, foot से आ रहा है blood, dorsal venous arch से, उसको लेकर ये जा रही है and ultimately draining it into the femoral vein, because this is where it enters at the end of the day. Okay, so it enters into the femoral vein by piercing the cribriform fascia at the saphenous opening. It contains about 10 to 15 valves, ज़ाहिर इतनी लंबी है, which prevent the backflow of the blood, which tend to occur because of the gravity. One valve is always present at the saphenofemoral junction, यानी जहाँ ये femoral vein में enter हो रही है. Incompetence of these valves make the vein dilated and tortuous, leading to varicose vein. This is all common sense. The vein is also connected to the deep veins of the limb by perforators. There are 3 medial perforators just above the ankle, 1 perforator just below the knee, and another one in the region of the adductor canal. So these are fixed locations. इसके अलावा भी हो सकते हैं और इनमें changes भी हो सकती हैं. The perforating veins are also provided with valves ताकि सिर्फ superficial से deep flow हो. Otherwise अगर ये valve fail होंगे तो varicose veins हो जाएंगी. Okay, so ये सिंपल स्टोरी है जो आपको याद रखनी है फॉर द ग्रेट सैफेनस वेन. इट्स इजी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ठीक है, अब ग्रेट सैफेनस वेन में क्या क्या आता है. ग्रेट सैफेनस वेन जहाँ से शुरू हो रही है, तो जो डोर्सल वेनस आर्च है उसका मीडियल मार्जिन यहाँ ऑब्वियसली ड्रेन करेगा. लेग में इट कम्युनिकेट्स फ्रीली विद द स्मॉल सैफेनस वेन एज वेल एज द डीप वेन्स ऑफ द लेग. तो ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं ग्रेट सैफेनस वेन के. जस्ट बिलो द नी देयर इज एंटीरियर वेन ऑफ द लेग which communicates with this vein. Then there is posterior arch vein which is large and constant. Then there is a vein from the calf. So basically अगर मुझे इसको समराइज करना हो, इसको आसान करने का तरीका ये कि जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है वहाँ से इसमें ट्रिब्यूटरीज एंटर हो रही हैं इसमें, और इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. बट ये 3 ट्रिब्यूटरीज आपको भूलना नहीं है भाई. ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक, ये राइट एट द एंट्री ऑफ द ग्रेट सैफेनस वेन इनटू द फीमोरल वेन, ये 3 ट्रिब्यूटरीज फिक्स हैं, कॉमन हैं, कांस्टेंट हैं, हर वक्त होती हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है टू द कुटेनियस आर्टरीज. तो ये नाम आपको याद रखना है. ठीक है. अच्छा, थाई रीजन में इसके साथ क्या क्या जुड़ता है ग्रेट सैफेनस के साथ? एसेसरी सैफेनस वेन, एंटीरियर कुटेनियस वेन ऑफ द थाई. सिंपल, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है. जस्ट बिफोर द cribriform fascia, दिस इज वेरी कांस्टेंट. 3 veins which are corresponding to the cutaneous arteries. Okay, right.
just before the termination, the deep external pudendal vein, the thoracoepigastric vein, runs along the anterolateral wall of the trunk. It connects the superficial epigastric vein with the lateral thoracic vein. So ये vein important है because ये one of the tributaries को superficial epigastric को connect कर रही है lateral thoracic के साथ. Thus it is an important connection between the veins of the upper limb and the lower limb. अब ये point ना बड़ा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली, बिकॉज आई डोंट नो यहाँ इन्होंने डायग्राम में इस तरह से शो किया है उसको या नहीं किया, बट द पॉइंट इज कि there is, so this is the venous drainage of the lower limb, right? So one of these three vessels, and you have to know which one of them. It's important. You just cannot skip this, okay? So the superficial epigastric is actually connected with the lateral thoracic vein. Upper limb और lower limb का connection है via this particular vein, thoracoepigastric. So upper limb का जो भी drainage है और lower limb का जो भी drainage है वो एक छोटे से connection के जरिए superficial epigastric के साथ वो connection जुड़ता है और यहाँ सारे upper limb की supply है. So they are both connected by the thoracoepigastric, right? So in summary, you have to remember that the blood supply of the upper limb and lower limb, they have somehow a connection, and you need to remember that connection story, okay? So ये थी long saphenous vein. Now let's talk about the short saphenous vein, which is also called the small saphenous vein. ये भी dorsum of the foot से निकलती है, but from the lateral end. It enters the back of the leg by passing behind the lateral malleolus. In the leg, it ascends lateral to the tendocalcaneus and then along the middle line of the calf to lower part of the popliteal fossa. So it's running at the back of your leg. Here it pierces the deep fascia and opens into the popliteal vein. देखो ये आपको root और ultimate entry पता होनी चाहिए. So that is how the if this is the great saphenous vein because going upward. Short saphenous vein ने खत्म हो जाना है at the knee. So it connects with the popliteal vein and that's the end of the story. इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं है. So ये medial side से जो निकल के लंबी चल रही है, all this is obviously the great saphenous vein. Okay, the short saphenous vein will be finished at the popliteal vein, which is at the knee, back of the knee, popliteal fossa. It drains the lateral border of the foot, the heel and the back of the leg. It is connected with the great saphenous vein. Obviously perforators भी हैं और connecting branches भी हैं, and this short saphenous is accompanied with the sural nerve, right? So let me take you back to another important diagram जो हम start में देख रहे थे, ये वाली diagram. So this is the dorsal venous arch, or is dorsal venous arch की medial, that's going to be the medial end because there is big toe and that's the lateral end. So medial end से जो vein निकल रही है that is great saphenous, और lateral end से जो vein निकल रही है that is short saphenous. यहाँ dotted इसलिए दिखाई है क्योंकि ये आपके leg के front पे नहीं होती बल्कि ये बैक साइड पे होती है. फ्रॉम द लेटरल malleolus पीछे चली जाती है और फिर ये पीछे ही चलती रहती है और अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द popliteal vein. ओके, राइट. So let's continue our discussion. ये general features और इन veins के roots और इनकी tributaries, they are all important stuff. तो मैंने अभी जो बात की सारी, we talked about long saphenous vein, we talked about short saphenous vein. Now both of them were obviously superficial veins. Now let's talk about perforating veins. As already mentioned, they connect the superficial veins with the deep veins. Okay, there are indirect perforating veins. They connect the superficial veins with the deep veins through muscular veins. So they go through here and there, first go to the muscles, then go to the deep vein. So here is the diagram showing a direct perforator. So this is a deep vein, this is a superficial vein, and there is a direct pipeline, direct communication. So blood goes directly from superficial to deep. That is called a direct perforator. लेकिन ये perforators आप देख रहे हैं, ये भी connections हैं superficial और deep के बीच में, लेकिन बीच में बहुत सारे muscles को भी ये drain कर रहा है इस तरह से खिंच पिच. So that is called an indirect perforator. Okay, so indirect perforator and direct perforator. Direct perforator connect the superficial vein directly to the deep vein. The great and the small saphenous veins are the large perforators. The small direct perforating veins are in the thigh. There is adductor canal perforator below the knee, in the leg, lateral perforator. ये आपको सारे actually मतलब ये एक तो constant होते भी नहीं है 100%, but you should know at least कि कहाँ कहाँ perforator हैं.
पर्टिकुलरली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वैस्कुलर सर्जरी, तो जब वैस्कुलर सर्जरी आप पढ़ेंगे विच इज ऑब्वियसली पोस्ट MBBS स्पेशलाइजेशन टाइप ऑफ थिंग, तब तो आपको एक एक परफोरेटर पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि जब वेरिकोज वेन्स को डील करते हैं, जब वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन करते हैं, तो ये परफोरेटर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसको डील करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए परफोरेटर्स हैं किधर, ठीक है। तो यहाँ ये परफोरेटर्स के सारे नाम दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन द थाई देयर इज एडक्टर कैनाल परफोरेटर, सो लोकेट वेयर इज द थाई एंड हियर यू सी द एडक्टर कैनाल परफोरेटर इन द थाई, ओके। देन देयर इज in below the knee, one perforator connects the great saphenous vein or the posterior arch vein with the posterior tibial. So below the knee you see this is the knee region, that's the knee region, and here you see different below knee perforator, okay. Then there are in leg lateral perforator, and medially there are 3 perforators, upper medial, middle medial, and lower medial, and you can see them in the diagram here. There's a lateral perforator, then upper medial, middle medial, and lower medial. These are all perforators connecting the superficial veins with the deep veins. That's the simple story, okay. Now what is a calf pump or the peripheral heart? ये भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि लोअर लिम्ब में कुछ मसल्स ऐसे हैं जो बड़ा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड मूव करता है इन द अपर डायरेक्शन। यहाँ को एक डायग्राम, सो दिस फॉर एग्जांपल इज अ मसल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग मसल, एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुशेस द ब्लड टू मूव इन द अपर डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड अ मसल पम्प, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ पेरिफेरल हार्ट, okay, or the calf pump. In the upright position of the body, the venous return from the lower limb depends largely on the contraction of the calf muscles. They are known as calf pumps, और ये बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं बाय द वे। इनको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। जैसे हार्ट का काम पंपिंग ऑफ ब्लड है ना, इनका काम भी पंपिंग ऑफ ब्लड है, ओके। When this muscle contract, blood contained in large sinuses within it is pumped into the deep veins, and when muscle relaxes, तो फिर ऑब्वियसली वेन्स जो हैं, साइनसेस जो हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ कट ओपन प्रोसीजर क्या है? वेनिसेक्शन इज डन ऑन द ग्रेट सैफेनस वेन। ये पर्टिकुलरली उस वक्त किया जाता है जब आपको कोई वेन नहीं मिल रही, आपको सेंट्रल लाइन मैनेज करनी है पेशेंट की, या कोई इंट्रावेनस इंजेक्शंस देने, एंड यू आर अनेबल टू फाइंड अ वेन, देन यू कैन एक्चुअली कट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मैल्योलस इज द लॉन्ग सैफेनस वेन। उसको आप अप्रोच करते हैं, एंड देन यू एंटर योर कैन्यूला और योर नीडल directly into the vein. So that is called a cut open procedure for long saphenous vein. Saphenous nerve is identified and is not injured as it lies anterior and there. This is not an easy job. ये ऐसे डायग्राम में देखना और यहाँ समझना बड़ा इजी लग रहा होता है। ये रहा मीडियल मैल्योलस, उसके सामने ये वेन है, उसके साथ बिल्कुल एंटीरियरली नर्व चल रही है, but I mean it requires a lot of practice ताकि आप नर्व को डैमेज ना करें। Great saphenous vein is used for bypassing the blocked coronary arteries as well. So they are used in the cabbage procedures. Varicose veins and ulcers. If the valves in the perforating veins or the termination of the superficial veins are damaged, then they lead to varicosities. And varicosities की वजह इस तरह से दिखती है, देखो सूजी हुई फूली हुई veins, and they can also lead to varicose ulcers. Now varicose veins often occur during the 3rd trimester of the pregnancy as well. Because pregnancy में there is huge changes in the hemodynamic stability of the person already. तो अगर valve भी incompetent हैं तो there will be varicosities particularly being obvious in the pregnancy. Trendelenburg test is done to find out the site of the leakage or defect of the patient with the varicose vein, and only the superficial vein and the perforating veins can be tested. Deep vein cannot be tested. Remember this point, okay? So this test is particularly for testing superficial veins and the perforators. The patient is made to lie down. लेट जाओ भाई, ऐसे होके सीधे होके लेट जाओ. This is the first thing, and the veins are then emptied by raising the leg. पाँव ऊपर की तरफ उठा लो दोनों पाँव. So varicose veins जो हैं वो empty हो जाती हैं, और now the pressure is applied with a thumb at the saphenofemoral junction. So this is the junction where the great saphenous vein enters into the femoral vein. Cribriform fascia, saphenous opening. इस पे आप pressure apply करते हैं और फिर patient को कहते हैं जल्दी से खड़े हो जाओ. To test the superficial vein, the pressure is released slowly. Quick filling of the varicose vein from above indicates incompetency of the superficial vein. So that's a simple test to do. And to test the perforating vein, the pressure at the saphenofemoral junction is not released. अंगूठा वहीं रखे रहते हैं, but maintained for about a minute. Gradual filling of the varices indicate incompetency of the perforating vein. So basically आप जो saphenofemoral junction है उस पर अंगूठा रख के प्रेशर लगाएंगे और अब पेशेंट को कहें खड़े हो जाओ. पहले पेशेंट लेटेगा, लेट के पहले पाँव दोनों ऊपर करेगा ताकि वेन्स खाली हो जाएं,
and then you put up your thumb at the saphenous opening and then ask the patient to stand up. अब आप यहाँ से अंगूठा हटा लेंगे. If you have to check superficial veins, और अगर perforators चेक करने तो अंगूठा रखे रहेंगे. और फिर भी अगर varicose veins में दोबारा blood आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि perforators damaged हैं. After a deep vein thrombosis affecting the perforator, they recanalize without valve, so that's a problem, ये सर्जरीज में अगर अब सपोज ये एक सुपरफिशियल वेन है और ये कनेक्ट हो रही है डीप वेन के साथ, एंड नाउ कोई सर्जरी की, इसमें थ्रोम्बोसिस करवाया, अगर इसमें रिकैनलाइजेशन होती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वाल्वलेस. इसमें कोई वाल्व नहीं होगा, एंड दैट्स अ बैड न्यूज. अगर वाल्व नहीं होगा तो गड़बड़ी गड़बड़ है. ठीक है. So all these things are very important. Clinically जब सर्जरी के मेरे लेक्चर्स होंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा. So that's about the veins. So you notice there are superficial veins, then there are perforators, and then there are deep veins. आपको ये तीनों के बारे में जो बातें बताई हैं, they are all very important clinically. Now let's talk about, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था, we'll talk about veins, we'll talk about lymphatic drainage, and we'll talk about innervation. So we dealt with the venous drainage. Now the second thing which I have to start is the lymphatic drainage. So most of the lymph from the lower limb drains into the inguinal lymph node. ये मैंने पहले भी बात की थी कि inguinal region में जो lymph nodes हैं, यहाँ पे ये सारा lower limb का lymph drain करता है. ठीक है. Either mostly directly or partly indirectly through the popliteal or the anterior tibial nodes. The deep structures of the gluteal region, जो buttock region है, and the upper part of the back of the thigh drain into the internal iliac lymph nodes, a different group of lymph nodes. Okay, so most of the lower limb goes to the inguinal lymph node, and buttock region goes to the internal iliac. How do you classify the lymph nodes? Superficial inguinal lymph nodes and deep inguinal lymph nodes. And lymphatics are the pipes. ठीक है, ये channels हैं, और lymph node तो आपको पता है lymph node है. So there are superficial lymph node, there are deep lymph nodes which are at the inguinal region, at the popliteal region, and also at the anterior tibial lymph nodes. और अगर pipes की बात करें जिनमें से lymph गुजरता है, they can be superficial lymphatics and deep lymphatics. अब थोड़ा comments इन्होंने किया है on superficial inguinal nodes or deep inguinal lymph nodes. So let's talk about the superficial inguinal lymph node. ये हमने already chapter 3 में discuss किया था when we were talking about the front of the thigh. They're very important nodes because ये सिर्फ lower limb को drain नहीं करते, बल्कि they also drain the perineum, and they also drain the trunk region which is below the umbilical plane. So अगर if there is a person standing और ये उसका belly button है, umbilicus अजीब सा मैंने person बनाया, but anything below the umbilical region, जो जितना भी trunk है, that also goes into the superficial inguinal lymph node. And if you remember, there were three different groups. One was the lower or the vertical group. There was upper lateral and upper medial group. मैं वो diagram खोल देता हूँ. ये वाली diagram आपके लिए मैंने अलग से खोल रखी है, यहाँ पे देखें. So ये thigh region है. This is the anterior superior iliac spine, and here we are, green one is the inguinal ligament, and below the inguinal ligament we are looking at the superficial inguinal lymph nodes. तीन groups हैं. This is number 1, for example. This is vertical, and this is number 2, if we call it. So this is upper medial because this is scrotal region if it's a male body, and that is number 3 called the upper lateral. So vertical group or lower vertical group. So lower vertical group, and it drains most of the lower limb. So lower limb का जो lymph है वो इसमें आना है. The upper medial group, it drains the skin of the lower part of the medial skin of the anterior abdominal wall, skin of the perineum, and openings in the perineum. So anal और जितनी भी openings हैं perineal region में, they all come and drain here. And then the third one is the upper lateral group, which drains the lower lateral part of the anterior abdominal wall. So ये तीन ग्रुप्स हैं जिनका यहाँ पे दोबारा जिक्र हो रहा है. लोअर वर्टिकल ग्रुप इज दिस वन, एंड देन अपर लेटरल is this one, and upper medial is this one. Okay, and उनके draining regions यहाँ पे दोबारा से लिखे हुए हैं कि जो lower vertical है, it is the one which actually drains most of the lower limb. Okay, it is placed alongside the terminal part of the great saphenous vein. 4 to 5 इसमें nodes होते हैं, जैसे इस diagram में भी दिखाया हुआ है. There are about 1, 2, 3, 4, 5 nodes in this diagram. A few lymphatics accompanying the short saphenous vein cross the leg and drain into a group of this node. So basically ये सारी बात इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पढ़ना है इसको समझना, और इतनी बहुत ज़्यादा हाइड भी नहीं है. भाई ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए. अपर लेटरल है, उसका ड्रेनिंग रीजन क्या है. अपर मीडियल है, उसका ड्रेनिंग रीजन क्या है. ओके, ये अब आपको यहाँ इस डायग्राम में भी हमने किया था, यहाँ दोबारा लिखा हुआ है. इज द सेम स्टोरी. ओके,
Then there are deep inguinal lymph nodes. They are about 4 or 5 in number and they lie medial to the upper part of the femoral vein. The most proximal of this group, gland of Cloquet or Rosenmuller, it lies in the femoral canal. Okay, again something that we discussed when we were doing the femoral canal, but anyways you have to रिमेंबर दिस अगेन. और ये जो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, इनमें कहाँ से टेरिटरीज आती हैं, कौन कौन सा लिम्फ ड्रेन होता है, अफरेंट्स इसके क्या क्या है, सारे के सारा सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है वो ड्रेन करता है इनटू द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ऑल्सो द पॉप्लिटियल नोड्स, ऑल्सो द ग्लैंड्स और द क्लाइटोरिस नोड्स एंड द डीप लिम्फैटिक्स ऑफ द लोअर लिम्फ. सो ये सारा इस डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में आ रहा है और अल्टीमेटली डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड से ये सारा लिम्फ चला जाएगा इनटू द एक्सटर्नल आइलिएक नोड्स. ओके, सो पॉप्लिटियल हो या डीप लिम्फैटिक्स जितनी भी अभी हम डिस्कस करेंगे ये सब जाती हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड से चले जाते हैं इनटू द एक्सटर्नल आइलिएक. अब पॉप्लिटियल लिम्फ नोड है, सो दे विल लाई एट द टर्मिनेशन ऑफ द सैफेनस वेन, शॉर्ट वाली, क्योंकि शॉर्ट सैफेनस वेन जो है इट एंड्स एट द लेवल ऑफ द popliteal vein. So this is the popliteal group of lymph nodes. Okay, in the popliteal fossa, they receive afferent from all the territory which is running along the short saphenous vein. So the territory of the short saphenous vein, the deep parts of the leg, and also the knee joint. और इनके जो efferents हैं वो चले जाते हैं to terminate into the deep inguinal nodes. So these are the popliteal group and they will ultimately go into the deep inguinal lymph nodes. Okay, तो आपको हर lymph node का बेसिक तरीका भी यही होता है पढ़ने का कि आपको उसके afferents पता हो और फिर उससे efferents कहाँ जा रहे हैं वो पता हो. Then there are anterior tibial lymph node. One inconstant node may lie along the upper part of the anterior tibial artery. When present, it collects lymph from the anterior compartment of the leg, but that's very inconstant. हमेशा नहीं होता. Superficial lymphatics, अब हम बात कर रहे हैं channels की. These lymph vessels are large. अभी तक हम nodes की बात कर रहे थे. Superficial nodes and deep nodes. Now we're talking about the channels. They run in superficial fascia. That's why they are called superficial lymphatics. And ultimately they form two streams. The main stream follows the great saphenous vein and ends in the lower vertical group of the superficial inguinal lymph node. And the accessory stream follows the small. तो दोनों जो बड़ी वेन और छोटी वेन है उसके इर्द गिर्द ये पाइपलाइंस, ये चैनल्स चल रहे होते हैं जिसमें lymph flow करता है. Then there are deep lymphatics. So these were the superficial lymphatic channels. Now the deep lymphatics. They are smaller, fewer than superficial lymphatics, although they drain all structures lying deep to the deep fascia. They run along the principal blood vessels and terminate mostly into the deep inguinal lymph nodes. Easy peasy stuff यार, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. The deep lymphatics from the gluteal region, buttock region से, they go directly into the internal iliac nodes. ये बात मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ. Now clinical कुछ importance है इस subject की. There is a test called Perforating test. This is employed to test the deep veins. A tourniquet is tied around the upper part of the thigh, tight enough to prevent any reflex down the vein. The patient is asked to walk quickly for a while and then the tourniquet बंधा हुआ है अभी उसको, tourniquet बांध के उसको बोलते हैं चलो. If the perforating in the deep veins are normal, the varicose veins shrink. Whereas if the perforators in the deep veins are blocked for any means, जो varicose veins हैं वो further prominent हो जाती हैं. अगेन अगर ये बात अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रही तो वेट फॉर माई सर्जरी लेक्चर्स जहाँ मैं इसको डिटेल में डायसेक्ट करूँगा. एलिफेंटियासिस, अगर लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी भी वजह से, लिम्फ ने यहाँ से ऊपर मूव करना है टुवर्ड्स द सुपरफिशियल एंड द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, अगर किसी भी वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो लिम्फैटिक ब्लॉकेज होगा और पीछे यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से देयर विल बी लाइक बिग एरिया कॉल्ड elephantiasis. Okay, the commonest cause of a swelling in the inguinal area of the lymph node is because of the anything which can infect or sometimes cancer cells जो lymph node को जाके उसको जाके अपना घर बनाएंगे और वहाँ इन्फेक्शन की वजह से भी lymph node enlarge हो सकता है और कैंसर सेल्स की वजह से भी lymph node enlarge हो सकता है. So any swelling in these lymph node should never be taken lightly. It always has to be addressed. अगर inguinal lymph nodes का size बढ़ता है and they become palpable, so it always has to be taken very seriously. Okay, large inguinal lymph node, always a serious issue. It will, the person will be lucky if it is only an infection. God forbid, if this is a cancer, then that's a bad news. Okay.
तो हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. वी हैड टू डिस्कस द वेन्स, वी हैड टू डिस्कस द लिम्फैटिक ड्रेनेज, veins में particularly superficial veins, and then we had to discuss the innervation. So section number 3 now I'm beginning कि innervation क्या है, and that's also pretty straightforward याद करने वाली चीज़. Okay, the principles involved are the same जो हमने upper limb में discuss किए थे. Dermatomal distribution, important features. Cutaneous innervation of the lower limb is derived mainly from L1 to L5 and S1 to S3 segment of the spinal cord ventral segments. Okay, partly from the T12 and S4, but these are the major ones: L1, L5, S1, S3. As a rule, the limb is supplied only by the anterior primary rami. The only exception to this rule is that the skin of the superomedial quadrant of the gluteal region is supplied by the posterior primary rami. Okay, अभी हम diagram पे देखते भी हैं. There is a varying degree of overlap of the adjoining dermatomes. ये हमेशा होता है, upper limb में भी होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है याद रखने के लिए. Initially, each limb bud has a cephalic border and a caudal border. क्योंकि ऐसे छोटी सी bud होती है, तो एक इसका head की तरफ region होता है और एक head से दूर होता है, तो cephalic and caudal. These are known as preaxial or postaxial borders as well, but then they rotate. The limbs rotate, और ये जो rotation होती है 90 degree medial rotation of the lower limb, इससे ये borders change हो जाते हैं obviously. Okay, dermatomes of the lower limb are distributed in the orderly numerical sequence along the preaxial border from above downward, T12 to L1 and L4. So if you look here, so this is kind of a numeric arrangement. You see L1, L2, and L1, L2, L3, L4, L5. So it's kind of an order there. That's not an important point to remember. As the limb elongates, the central dermatomes, again, that's I would say waste of time rather than this. We should actually be looking at the diagram. So that's the beautiful diagram that you must master. तो आपको सारी dermatomes और innervation पता चल जाएगी. So you look at the lower limb from the front and you divide these areas starting from the inguinal region, from above the inguinal ligament to below the inguinal ligament in this shape is the L1 region. That is all L1. Then you have the other region, most of the front of the thigh, L2, and then medial side of the thigh and upper part of the knee, L3. So that's the way you have to remember it. I mean, what I would do, और जो मैं करता हूँ हमेशा इस तरह innervation की diagrams पे, I tend to memorize these things by looking at the diagram and spending some time here. So if I'm looking at the thigh region, for example, I would remember कि thigh region में thigh region starts with T and there are 3 innervating segments, L1, L2, L3. 3 thigh. So I would now never forget this. लेकिन I'm not a mnemonic person. मैं आपको mnemonics नहीं देना चाहता. उसका रीज़न ये है कि mnemonics फिर आखिर में याद रखने के लिए mnemonics के भी mnemonics पढ़ने पड़ते हैं कि ये वाला mnemonic किसके लिए था, ये वाला mnemonic किसके लिए था, वो मैं नहीं चाहता कि आप करें. बट एनीवेज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपके पास और कोई ट्रिक है वो यूज़ करें. बट द पॉइंट है कि ये सारी डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको ना रट्टा होनी चाहिए, बिल्कुल हिफ्ज याद होनी चाहिए. ये याद होंगी तो फिर इनर्वेशन मसला नहीं है. सो दिस इज L1, L2, L3 रीजन. लेग को डिवाइड किया हुआ देखें बाय एंड लार्ज 2 सेगमेंट्स में. एक बीच में लाइन बना दी है जो मीडियल साइड है, दैट इज L4, लेटरल साइड इज L5. सिर्फ जो लिटिल टो और लेटरल साइड ऑफ द फुट है दैट इज S1. सिंपल है ना यार, फ्रंट तो बहुत ही सिंपल है. सो जो थाई रीजन है उसमें भी 3 नर्व्स हैं टोटल, और जो लेग और फुट रीजन है उसमें भी 3 है, L4, L5 एंड S1, है ना. पीछे जो बैक साइड है, बैक साइड इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो इफ यू सी देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ L1 एंड देन L2 कंटिन्यू करता है ऑन द बैक साइड लेटरल साइड पे, और in the middle of the posterior side of the thigh, in the middle of the posterior side of the leg is all one single segment which is S2. And then on the medial side of the thigh, on the posterior aspect, is continuation of L3 from here. ये front पे था, ये back पे जा रहा है. So spend some time guys here. Sole का जो middle है that is L5, and जो sole का medial side है that is L4. Continuing with the medial side of the front and also of the back. So spend some time here. So अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर इसकी ट्रिक बताएं. देखिए बाज़ चीज़ों की ट्रिक यही होती है कि आपको उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है. यू स्पेंड टाइम, यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये बिल्कुल फैमिली रिलेशंस की तरह है. सो इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर गर्ल, यू डोंट नो हर, there is no trick to know her. You have to spend time. Nobody will tell कि आपकी वाइफ की पसंद क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता. You have to know her. You have to spend time with her. So similar are these beautiful diagrams. These are just like your girl. You have to spend time with them. If you spend time with them, you will remember
अब मैक्सिमम ये कर सकते हो, एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप इसको एक दफ़ा देख लो, फिर एक ब्लैंक पेपर उठाओ, खुद बनाने की कोशिश करो. आर यू एबल टू ड्रॉ कि थाई में किस रीजन में क्या सप्लाई है, लेग में किस रीजन में क्या सप्लाई है. हेयर द कॉन्ग्रुएंस एंड द ब्यूटी ऑफ द डायग्राम डजंट रियली मैटर, बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वेल समवेयर दिस एरिया इज L1, समवेयर दिस एरिया इज L2 एंड दिस इज L3. इफ यू कैन ड्रॉ दिस देन यू हैव रिमेंबर्ड इट. तो कोशिश करें, टाइम स्पेंड करें यार, याद हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ मसल्स की सप्लाई बताई है, बट दैट वी हैव डिस्कस्ड जब हम मसल्स डिस्कस कर रहे थे. सो इट्स नॉट द टॉपिक हियर ऑफ डिस्कशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. जॉइंट मूवमेंट्स हमने पहले इस तरह से एक जगह डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये देख लो. हिप पर कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं? हिप पर एक्चुअली बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, बट ऑल दीज मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय L1, L2, L3. नी पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है. एक्सटेंशन इज कंट्रोल्ड बाय L3, L4, फ्लेक्शन बाय L5. रिमेंबर दिस. एंकल की ये दो मूवमेंट्स, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटिफ्लेक्शन. Segments कौन से involved हैं, and for foot inverter, everter, that is a super important kind of text to remember. And here is a good diagram. So if this is the knee, then moving the knee in this direction is extension, this direction is flexion. So knee per flexion L5S1. See, यही लिखा हुआ है, knee per flexion L5S1. So either you look at the diagram or you read the text. You have to remember it. मेरा तरीक़ेकार डायग्राम को देख के याद रखना मेरे लिए ज़्यादा आसान है. So I would do it this way कि flexion L5S1, extension L4. अगर मैं ये डायग्राम देख रहा हूँ, so hip joint पर flexion और extension की बात हो रही है. extension, flexion, segments. ankle पर dorsiflexion L4, L5. plantiflexion L5S1. inversion L4, L5, eversion L5S1. Okay, so look at this diagram, super important diagram, and then try to read the text here, and that's basically it. Okay, and what is clinically written here? So very small line. Like dermatomes, the biotomes are also helpful in determination of the level of lesion in the spinal cord. So you basically check the muscles and their movement to identify कि किस spinal segment में कोई damage है अगर है तो. Then the last bit is the sympathetic innervation of the lower limb is derived from the lower 3 thoracic and upper 2 lumbar, T10 से L2. ये sympathetic stimulation है lower limb की. The fibers arise from the lateral horns like it does for all the sympathetic supply, and they pass out with the ventral roots in the preganglionic fibers. Sympathetic system का मैं architecture अभी आपको नहीं समझा रहा. They pass down the sympathetic chain to relay in the lumbar and the upper 2 sacral ganglia. So preganglionic fiber आते हैं, यहाँ ganglia में synapse करते हैं, और फिर postganglionic fiber निकलते हैं और वो supply करना शुरू करते हैं lower limb को. Okay, so the postganglionic fibers emerge from the lumbar sympathetic ganglia and pass through the gray rami to reach the lumbar nerves. From these nerves, they pass into the femoral nerve, and from the femoral nerve, they go into the lower limb, and they go and supply there. Okay, the postganglionic fibers. The blood vessels to the skeletal muscles are dilated by sympathetic activity, so that's the action. Sympathetic denervation of the lower limb can be produced by removing the second, third, and the fourth lumbar ganglia. यार ये zulm कौन करेगा? But बहरहाल. Now, this divides all the preganglionic fibers to the lower limb. अगर आप इन segmental supplies को cut off कर दें, ठीक है? The first lumbar ganglia is preserved because it controls the proximal urethral sphincter mechanism. Its removal, well, ये क्यों remove करेंगे यार? नहीं कर रहे हम. Sympathetic nerves are vasomotor, pseudomotor, and pilomotor. So vasomotor, pseudomotor, and पाइलोमोटर. ये आपको हम जब सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये डिटेल में बात भी करते हैं. सो यहाँ पे आपको मोटी मोटी बात जो पता होनी चाहिए सिंपैथेटिक इनर्वेशन के हवाले से, वो ये कि कौन से सेगमेंट्स हैं, प्रीगैंग्लियोनिक कहाँ किन सेगमेंट्स में जाकर किस गैंग्लिया के साथ साइनैप्स करते हैं, और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन सी नर्व या ब्लड वेसल्स के जरिए पहुँचते हैं टू द लोअर लिम्ब. ओके, नाउ दैट्स ऑलमोस्ट अ सिमिलर टेबल जो अपर लिम्ब में भी आया था, और मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि आई मीन इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू दिस, अदरवाइज आपने अपर लिम्ब भी पूरा कर लिया है, लोअर लिम्ब भी पूरा कर लिया है. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस on this table कि upper और lower limb में फ़र्क क्या है. So for example, generally lower limb is for support of the body, stabilization of the body, and upper limb is for range of movements. Okay, इसी तरह जो bones हैं, thigh में femur है, यहाँ पे humerus होती है upper limb में, joint यहाँ पे hip joint है, यहाँ shoulder joint है, muscles. So these are kind of mirror images of each other. They are homologous type of organs. Upper limb and lower limb आपको हर जगह, leg का यहाँ पे counterpart forearm है, इसी तरह
अगर फुट की बात करें तो अपर लिम्ब में उसका काउंटर पार्ट हैंड है. सो आई मीन देयर आर सिमिलैरिटीज, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, बट डिफरेंसेस भी हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. अपर लिम्ब का काम डिफरेंट है, लोअर लिम्ब का काम डिफरेंट है, बट दैट्स इट. सिंपल चैप्टर था बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 11. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.